अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वारिस ख़ान। हमारा MCQs नंबर 11 है आज। टर्म ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो होती है वो होती है 5 ईयर होती है। एक्सप्लेनेशन: इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर is the authority and the appointed chair of the election commission of Pakistan, an institution constitutionally empowered to conduct free and fair election to the national and provisional legislatures. उसके बाद है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व असेंबली विद इन 48 hours. However, President can only dissolve the National Assembly if so advised by the Prime Minister. And the National Assembly, as head of the state, President conducts and oversees the general elections when the National Assembly stands dissolved after completing its 5 year term. अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी मैंने गूगल से ही उठाई है, तो आप भी चेक कर सकते हैं। MCQs नंबर 13 है द ओनली मुस्लिम वोमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस RTC वाज बेगम जहां आरा शाहनवाज. The first roundtable conference took place in London between November 1930 and January 1931. It was inaugurated by King George V on November 12, 1930 and chaired by Ramsay MacDonald. This was the first conference organized between the British and the Indians on an equal footage. The courageous refused to attend the Congress. The Congress refused to attend the conference. MCQ नंबर 14 है द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब. ये हमारे पास थोड़ा सा मुझे इस पर डाउट है, यहाँ पे आना चाहिए था गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर. The Treaty of Amritsar of 1809 was an agreement between the British East India Company and Maharaja Ranjit Singh, the Sikh leader who founded the Sikh Empire. Among the outcomes was that Singh gained a Karti Balanchi to further consolidate his territorial gains north of the Satluj River at the expense both of other Sikh chiefs and their peers among the other dominant communities. MCQ number 15 है हमारे पास. डॉक्टर अब्दुल सलाम, फर्स्ट नोबेल प्राइज रिसिपेंट ऑफ पाकिस्तान, गॉट हिज PhD डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने डिग्री ली थी. Dr. Abdul Salam was a theoretical physicist. He was the primary Pakistani and the second from the Muslim world to receive the Nobel Prize. He also served as the director of the Space and Upper Atmosphere Commission and advisor to the Ministry of Science and Technology from 1960 to 1974. Abdul Salam is the recipient of numerous awards including Nishan-e-Imtiaz and Sitare-e-Imtiaz. अब कुछ लोगों को यहाँ पे एतराज़ होगा कि मुस्लिम वर्ड और ये तमाम चीज़ें, इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, आप लोग खुद इसका फ़ैसला कर सकते हैं. हिब्बा खातून इज़ फेमस पोएटेस ऑफ विच लैंग्वेज? कश्मीरी. हिब्बा खातून वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ, हमारे पास है ये चंधारा. हर रियल नेम वाज जून विच मीन्स मून. शी इज़ आल्सो नोन एज जूनी. Though she was born in a village, she was not raised as a peasant but learned to read and write. She learned Arabic and Persian from the Maulvi or religious teacher in her village. MCQs number 17 है हमारे पास. राउंडेड उर्दू राइटर, रिनाउंडेड सॉरी थोड़ा सा पढ़ने में मुझे मसला आ रहा है क्योंकि ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है मुझे. Renowned Urdu writer Mushtaq Ahmad Yusufi by profession was banker by profession, born in Tonk, Rajasthan, India 1923, was a Pakistani stayer and humor writer who wrote in Urdu. Yusufi also served as the head of several national and international government and financial institutions. MCQ number 18 है हमारे पास. Lowari Pass connects Chitral with Dir. Lowari Pass or Lowari Top, 10,230 feet, is a high mountain pass that connects Chitral with Dir in Khyber Pakhtunkhwa.
The Loari top is one of the four major mountain passes to enter Chitral. The others are the Dora pass from Badakhshan in Afghanistan, Shandur top from Gilgit, and Broghol from the Wakhan corridor in Afghanistan. MCQs नंबर 18 है हमारे पास. डॉक्टर रुथ फाउ द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान कंपेन्ड अगेंस्ट विच डिजीज़. तो ये लेप्रोसी है, कोढ़ या जज़ाम कहते हैं जिस तरह. डॉक्टर रुथ फाउ अ जर्मन डॉक्टर पॉपुलरली नाउन एज पाकिस्तान मदर टेरेसा फॉर डेडिकेटिंग हर लाइफ टू इरेडिकेट लेप्रोसी इन दी कंट्री डाइड टुडे एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन कराची. ये टुडे नहीं आना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे. शी वॉज 87. शी डाइड आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड एज रिलेटेड इलनेस. 20 है हमारे पास MCQ नंबर. द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द डिकेड 2021 and 30 as UN Decade on Ecosystem Restoration. The United Nations is an international organization, intergovernmental organization whose purpose is to maintain the international peace and security, develop friendly relation among nations, achieve international cooperation, and to be a center for harmonizing the action of nation. It is the world's largest and most familiar international organization.